Hello dear students, welcome to my YouTube channel, the Chanak Classes. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is noun. Noun, you all have been reading since your childhood. No? So many nouns are there in the world. What is noun? There are different types of noun. Different types of noun on the basis of different bases, right? So first, let me tell you the definition. Let me define the noun. What is noun? Noun is a naming word. As we all know, simply, the simplest definition of the noun is a naming word. Or noun is a name of a person, place, animal or thing. No? किसी भी person, place, किसी भी name को, whatever the name you heard, किसी भी चीज को नाम तुम सुनते हो, वो सारे names noun ही होते हैं. So first, a noun is the name of person, animal, place or thing. It can name materials, it can name an idea, an emotion, a quality, a state, etc. ये किसी भी चीज को के नेम को हम कह सकते हैं. ये मटेरियल के नेम को कह सकते हैं, किसी थिंग के नेम को कह सकते हैं. वी कैन से नाउन द नेम ऑफ एनी आइडिया, एनी इमोशन, एनी स्टेट. ये सारे नाउन हैं. ओके, सो or the noun is divided into 5 categories, as you all know, I think. No, first they are proper, common, collective, material, abstract. What is proper? No, पहले तो सबसे पहले यही पार्ट्स हैं नाउन के. Then we'll study countable and uncountables. Then we'll study concrete and abstract, one by one. But the most famous types of nouns are proper, common, collective, material and abstract noun. What are proper noun? Proper noun is the name of a particular place, person, animal or thing. Before telling you about the proper noun, let me tell you something about the common noun. What is common noun? Common noun, अगर हम एक नाम लें और उसके पूरे इंटायर स्पीशीज का नाम हो जाए, लाइक पूरे एक उसके ग्रुप का नाम हो जाए, that is called common noun. Like if I say fan, fan is a noun, obviously it's a name, and if I say fan, it indicates all the fans in the world. I am not notifying, I am not ये clear नहीं कर रहा हूँ मैं that I am talking about which fan. If I just say fan, मतलब पूरे fan world में, so fan क्या हो जाएगा? It will be common noun. But उसी fan में अगर मैं किसी particular brand के fan का नाम रख दूँ, like Havells, it's a proper noun. So proper noun is the name of particular person, place, animal or thing. And common noun, it denotes a group commonly. जैसे मैंने बोला boy, यहाँ पे बोल रहा हूँ boy. So boy, what is boy? Boy is a noun. एक boy बोला मतलब पूरा boys. So that is common noun. And if I name a particular name like Ram, right, it's proper noun. If I say city, it's a common noun. And if I say Delhi, it's a proper noun. Then we move towards the let me write. Then we'll move to the collective noun. What is collective noun? Collective noun denotes a group, means a collection of something. Such things which always be in a collection, which always be in a group. Like army, we cannot say a single soldier an army. Single soldier is a common noun. कोई soldier सीधा soldier बोलूं, soldier means common noun. If I name a soldier, it will be proper noun. And if I say army, it is a group of soldier, which is a collective noun. Right? Student is a common noun. If I name a student like Rohan, so it's a proper noun. But if I say class, class means a group of students. One student cannot make a class. For class, the number of students should be more than one. That's why अगर हम एक मैंने class बोला, so class is basically a collective noun, right? बहुत सारे ग्रुप हैं. Herds, herd means क्या? Some group of animals, no, like herd of deer. तो
हर्ड भी हमेशा ग्रुप में ही होगा, कलेक्शन में ही होगा, दैट्स वाई हर्ड इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. द नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन refers to a material through which we can make something. Like from sugar, we can make some sweets. From milk, we can make cheese, we can make butter, we can make curd. No, so such things from which we can make some new things are called material nouns. Like iron. If I say iron, so iron can be molded into gates, many equipments, many household active equipments. बट वो सारे कॉमन नाउन हो जाएंगे. लेकिन मैं सिर्फ बोलूंगा आयरन, तो आयरन को हम किसी और चीज में बना सकते हैं. दैट विल बी मटीरियल नाउन. इफ आई से आयरन, आयरन, iron can be molded into gate. No, an iron gate, that is a common noun. But if I say iron, it will be only material noun. If I say milk, milk. If I say milk, तो what does milk mean? मतलब milk से हम स्वीट्स बना सकते हैं, we can make cheese, we can make curd, तो वो सारे कॉमन नाउन्स हो जाएंगे. लेकिन milk मटीरियल नाउन. Then abstract noun, we don't need to learn the definitions of all those types of noun. We have to just identify. We should know that which noun is what kind of noun, right? So abstract noun which we can see, no, which we can feel, we cannot touch. We can see also sometimes, but we cannot touch. Like love, we can feel love. लव फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते. देन आफ्टर childhood, right? Childhood can be seen, but it cannot be touched. Hatred can be seen, can be felt, but cannot be touched. जिसे हम फील कर सके, टच नहीं कर सकते. Basically, they do not occupy space. Abstract noun do not occupy space. That's why we cannot touch them. So now let's discuss about the types of noun on another basis, whether they are countable or uncountable. The noun which can be counted is called countable noun, which cannot be counted is called uncountable noun. Now let's see some proper nouns. What type of nouns can be countable and what type of nouns can be uncountable? Let me make it clear. Some proper nouns, like India, it is only one of its kind. There is not any other India. Ganga, only one of its kind. There is not any other Ganga. No, some other names like Delhi, it is only one of its kind. So ऐसे proper nouns जो सिर्फ अकेले होते हैं, यूनिक होते हैं, they are उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते. And the noun which cannot be made plural, that belongs to uncountable noun. So nouns like country, city, class can be this one. Proper nouns like Ganga, Rohan, ये क्या है? Particular name of person है ये, or anything. So they are called uncountable noun. They are called uncountable noun because ये particular है, इनके जैसा दूसरा कोई और नहीं है, उसे uncountable noun बोलेंगे. Then nouns like country, city, class. Country, lots of countries are there. Obviously India is only one, लेकिन सिर्फ मैं बोलूँ country is also a noun, India is also a noun. India is a proper noun which is only one, तो वो हमारा uncountable noun होगा. But country, lots of countries are there. 5 countries, 100 countries, 200 countries, we can count it. Rivers, we can count it, but Ganga we cannot count. Ganga is only one and unique, but river we can count. Lots of rivers are there in the world, in the country, right? So जिसे हम काउंट, अगर हम काउंट कर पा रहे हैं, so we can make it plural also. बहुत सारे हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, so they belong from countable nouns. Nouns like country, city, class, ये सारे countable nouns होंगे. Then material nouns like wood,
milk which we cannot count. और जब काउंट नहीं कर पाएंगे will not be able to make the plural, और वो क्या होगा? Uncountable noun. So we can say material nouns like wood, milk, glass are uncountables. वो uncountable noun है. Then abstract noun. Abstract क्या होता है? Happiness we cannot count. Pleasure we cannot count. Sorrow we cannot count. तो वो सारे क्या होंगे? Uncountables होंगे. But in some cases कुछ abstract nouns को हम plural बना सकते हैं. We can make some abstract noun plural like idea and ideas. So in that case ideas will be countable noun. लेकिन idea कुछ ऐसे नाउन जैसे देखो यहाँ पे pleasures, decisions. Decisions क्या होता है? Decisions we cannot see it's an abstract noun. लेकिन decisions को हम काउंट कर सकते हैं. Pleasure सीधा प्लेजर हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन प्लेजर्स को अगर दूसरे टर्म्स में बहुत सारे प्लेजर्स हों देन वी कैन काउंट इट. तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल बन सकते हो दे विल बी काउंटेबल, और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बन सकते हो दे विल बी अनकाउंटेबल. लाइक where it is milk, no sorry, yes, where how जैसे ब्यूटी, प्राइड, सॉरो, प्राउड, ये सब का हम प्लूरल नहीं बना सकते तो वो अनकाउंटेबल होगा. लेकिन डिसीजंस, प्लेजर्स, आइडियाज, उसके बाद इस तरह के बहुत सारे नाउन्स जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वो सारे क्या होंगे? काउंटेबल नाउन्स. सो दे आर काउंटेबल्स. ना नेक्स्ट वन इज, अभी हम ये पता चल गया कि प्लूरल हम किसका बना सकते हैं. वी कैन मेक प्लूरल ओनली अ काउंटेबल नाउन. ओनली अ काउंटेबल नाउन कैन बी मेड प्लूरल, बट an uncountable noun cannot be made plural. Right? Now second point of view हमारा है abstract and concrete. Abstract क्या होता है और concrete क्या होता है? Everything which we can see, which we can feel, which we can touch is concrete noun, and whatever which we can feel, maybe we can see but we cannot touch, is abstract noun. Abstract noun जिसे हम touch नहीं करते, which ऐसा noun जो space occupy नहीं करता, और space occupy नहीं करेगा so will not be able to touch it. टच नहीं कर पाएंगे, that will be abstract noun. और abstract noun के अलावा जो भी सारे बचे उसे concrete noun कहते हैं, because we can see them, we can touch them, we can feel them, right? So abstract noun में जैसे मैंने बताया भी happiness, sorrow, beauty, hatred, love, इस तरह के कुछ childhood, brotherhood, motherhood, इस तरह के बहुत सारे nouns हैं जो abstract हैं, which cannot be touched. लेकिन बाकी सारे नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है, जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नो, सिटी एंड ऑल. सो व्हाट वी हैव स्टडीड, फर्स्ट वी स्टडीड नाउन, द डेफिनेशन ऑफ नाउन, देन 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट. प्रॉपर, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन विच डिनोट्स अ ग्रुप. कलेक्टिव विच डिनोट्स अ कलेक्शन. मटेरियल जिससे कुछ हम नई चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकें. एंड एब्स्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी टच्ड, ओनली फेल्ट, like some feelings, no. Then proper, कौन से noun like nouns, country, city, इनको हम count कर सकते हैं, they will be countables. लेकिन proper noun जिन्हें जो only one होते हैं, only one of their count, उसे हम count नहीं कर सकते, so they will be uncountables noun. जैसे गंगा, रोहन, but it seems कि countable है, but वो अकेले हैं तो उसे हम count नहीं कर सकते. Then material noun, almost all the material nouns are uncountables. wood, sugar, iron, we cannot count, तो वो सारे अनकाउंटेबल्स नाउन होंगे. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये अनकाउंटेबल्स होते हैं. लेकिन बट कुछ स्पेशल केसेस में, इन सम सर्टेन केसेस जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन्स. देन काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते. एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच कैन नॉट बी सीन, which may be seen but which cannot be touched is abstract noun, and which can be seen, which can be felt, which can be touched, which occupy space is concrete noun. That's all for now today. Hope you like the video. अगर आपको समझ में आया so let me know कि आपको समझ में आया. Okay.